Hi, welcome to another session of India's first metabolic health conference, Low Carb across the globe. And I have with me today a doctor from India, from Delhi, Dr. Shraddhey Katiyar. I would want him to give his own introduction so that we can understand him better, the audiences can understand him better. Dr. Shraddhey, welcome, and please introduce yourself. Hello, Era. Thanks for having me. I myself, Dr. Shraddhe. I did my MBBS from GSV Medical College. I passed in 2012, and after that, I did a house job in Delhi. And after that, I went for masters in medicine. And for last 3 or 4 years, I am practicing low carb type of lifestyle, and I am prescribing my patient as well because uh, I did my 2 to 3 years. I can say like 30 months. I did a job in government hospital, and that job was a permanent job. But I was seeing that the patient was not recovering well on those medication. So in 20 February 2020, I resigned my that job and I started my own clinic here in Delhi NCR. To the first question, Dr. Katiyar, maybe Yeah. you detail on how you came into the world of low carb, being a mainstream doctor yourself. What is that one incident, Okay. or what circumstances changed your stance? Yeah. Exactly on 8th July 2030, my father expired because of the complications of diabetes. And I have no idea what happened with him because we all are following the proper guidelines. And those days I am doing MBBS, just past MBBS. I was in my internship, and his sugar was around 140 to 160 always on medications, but still he is not working well or behaving well, or he always complained that he is not feeling energy or these kind of things, and he is gaining weight, and after that he was losing some muscle tissue as well. So on 8th July 2013 he expired, and that gave me a shock. And after 2 years, when I entered in masters, uh, after clearing my masters, I joined government job in Delhi hospital, and I went for some blood test, routine blood test, and my HB1AC came around 6.1, right? And according to the guidelines, I was doing perfectly, Hmm. but my weight went up like 6 7 kg in last 2 years, and in 16 and 17, and H1AC in 2015 and 16 when I checked, it was 6.1. At that time I thought that something bad is going inside body, but I was doing correctly all the things. Hmm. So I started exploring internet, Hmm. and I heard about Dr. Jason Funk. Okay. So later after a year, I bought his book called Diabetic Code or Obesity Code. Hmm. So yeah, so after that, I read that books, and the knowledge I went through those books, that was totally contradictory what I learned in my MBBS or in MD. So some suggestion. I start giving some suggestion to my patient in the OPD, and that hospital was a government hospital, right? So in that busy OPD, I prescribing my patient cut the roti, cut the rice, and later days, after you can say 30 or 40 days, they coming to me that saying that our sugar is going down, right? So I have started cutting down his or her insulins or medicines, but some people there didn't like that, right? And that hospital was having like bulk of insulin injections in their storeroom, and the HOD said, please prescribe medicine and start prescribing insulin as well as almost every patient. But I declined that request
and keep prescribing the low carb diet. And I said to the patient, keep it private between you and me, right? In Feb 2020, 20, sorry, 3.5 years back, I was sitting in my flat in Noida, and a lady came to me, and she came with the complaint of diarrhea, right? And she was obese, and she was very dehydrated at that time, and she came with her son and a servant. So her weight at that time was 98, and for last 1 month she was taking treatment for diarrheal episode. When I saw her prescription, she was taking around 44 units of insulin and 10 to 12 tablets for hypertension or antidepressant pill or default pills for diabetes management, right? So one pill out of those anti-diabetic pills was causing her loose motion, I can say. Then I told her, you should stop this medicine. Then she replied, how can I stop? How can I, doctor, I stop this medicine? Because diabetes is progressive disease. So I gave her a 1 hour counseling. And after month, the lockdown came in March 2020. And she was at that time 60 years old, just retired from her job, right? So for next 4 to 5 months, she was, we can say everybody was locked inside their rooms, or we can say house. So she started taking my suggestions online, or we can say on WhatsApp, right? So in first month, she lost around 2.5 kg of weight, right? And after 15 days from her first visit, I stopped all her insulin injections, right? So she was afraid of stopping insulin injection, but when I stopped the insulin injection, the sugar uh, came normal always or every time, right? So after lockdown, in June 2020, like after 4 months, she again visited me, and she lost around 20 kg of weight. And at that time, in I think it was 5th June or 6th June, I prescribed only metformin 850 mg, and I stopped all her medications and all her anti-depressive medications as well. And she was feeling very light, right? So at that time, she was around 78 kgs in June of month. And 15 days back, she sent me her photograph or her weighing scale, and currently her weight is 58 kg, right? So by seeing her result, some patients coming to me, and I resigned at that time. So I have much time to entertain those private patients, and slowly, from I started from the diabetes, right? So a lot of her relatives came to me with the problem of PCOD, right? And when she lost around 30 kg, right, she sent me around 32 patients just for weight loss, right? So I started to cure diabetes, right? Right now, I am having most of the patient of weight loss and PCOD, Okay. right? So, And yeah, yeah. are you now practicing conventional medicine as well, along with the alternative? Yeah. This is the good thing with me. This is the good thing me. If needed, I can prescribe some medicine if needed. Yeah, I try to not to prescribe much medicine. Yeah. So, in your practice, as you said, diabetes and obesity patients, obese patients, you see mostly. What are the other conditions that who come to you most often? Uh, there are many type of patients. This is a very good question actually. The number one, the bulk of patients are coming for weight loss, then diabetes, then PCOD, then some skin issues as well, right? Some hair fall,
and some even for depression issues or anxiety issues. And these days, after when I joined the Twitter or X 1.5 years back, the the bulk of patients from the Twitter are coming for muscle gaining as well. Okay. Right. So a lot of boys or 30s in our 40s are calling me for gaining of some muscles or strength, like or for hair quality or for skin quality as well. So for Shraddhe, last 3 4 years, yeah. for the benefit of our viewers, can you spell out your Twitter ID? Because I'm sure more would want to reach out to you. Twitter ID. My Twitter ID is my same name, Dr. Shraddhey Katiyar. Okay. And I Yeah, guess yeah. you're following there, if I'm not Sorry. wrong. Yeah, I'm a huge we are follow each other. Yeah, yeah. we are follow each other. Yeah, Mm. yeah. So continue. You were saying something. Yeah. So for last 3 4 5 years, I learned a lot of things from my patients as well. And the main thing I learned was that these all lifestyle problems are cousins, like they are sisters to each other. And for last 3 to 4 years, I again restarted learning biochemistry and physiology, right? And from those books, I am still learning from new things at in year 2023 as well, right? So I am giving you example. The total blood sugar in our body running through if our sugar level is 100 milligram per deciliter, that in the any doctor clinic, when a doctor discuss about diabetes, they never discuss about the unit of the sugar level. They discuss about only numbers and prescribe the medicine, right? And if I say that the distance of Mumbai from Delhi NCR is 1300, right? So anybody can interpret that 1300 miles or 1300 kilometers or 1300 meters, Mm. right? So if you are not analyzing the number, how are you treating the patient, right? So if your sugar level is 100 milligram per deciliter, the total sugar running in your blood is 100 milligram. The total blood volume in a man, we can say in adult man 5 gram, right? In female, adult female 4 gram, right? If we push sugar like 5 gram extra, so if we push 5 to 10 gram, the glucometer will read 200 milligram per deciliter, right? So this high amount of sugar make blood viscous, or like we can say thick, right? And this thick blood have severe complications inside of our body, right? So brain via pancreas tries to push it down around 100, Mm. right? So this extra 100 milligram, right, sugar will convert it into fat. Why fat? Because fat stores most of the energy. Like in a computer, if you have large amount of files, first you have to convert it into zip file, right? If you eat 100 calories in 24 hours extra, then the 100 calories will be stored in the form of fat, because form stored most of the calories, because, or it will take less space inside the body, right? So if body stored the fat extra, those fat cells will produce some inflammatory markers, right? And that extra fat inside your heart, or inside your liver, or inside your pancreas, or inside your thyroid, or inside your ovaries will create inflammation according to the organs, right? In some individuals, if this fat is accumulated just below the skin, the side effect will come minimal, right? Of, if I can say, the inflammation of after storing fat, the ovaries uh, will give the complication like PCOD, right? Infertility, right? If that fat is stored inside our heart, you know what going to happen, right? If that fat inside the liver, everybody knows what going to happen. If there's fat inside the pancreas, everybody knows what going to happen. And today's world, as we are going through a very stressful life, like, and whenever the body feels stress,
it start storing the energy, and the energy is fat, because fat stores the most of energy. So if your food is not okay, inflammatory, if you are taking extra calories, if your work is giving you tension or stress, right? Our body feels some war kind of situation. And in any war, what a country will do if war is coming? They will storing arsenals. They will start storing the ration, the food, right? So if you give the signal to the body that war is coming, right, the body start storing the fat, right? And majority of the war is going on around our gut. So body stored fat around where the war is going to happen, like our gut, right? This is why our body, the most of our WBC cells, or we can say soldiers, deported in the intestine gut. 70 to 80% of our immune system is deported inside our gut. That's why our body stored fat around next midsection only, right? So for this conversation, we can say large tummy, PCOD, obesity, fatty liver. If pancreas is fatty, then it will not proper function, right? So these diseases, obesity will come with like knee damage, joints damage, right? And the inflammatory markers that are going to produce by these fatty cells may damage your joints as well. Not just weight. These Commonest, protocol that you like to use on your metabolically unhealthy patients, and what is the response to these unusual protocols? Because, as I assume, actually, not knowing yeah. about it too much. So, tell us Low about. carb is a very, low carb is a very relative term, Hmm. right? If a lady is 60 years old came to me, hardly strict vegetarian, right? And for last 2 to 3 generations, her whole family is strict vegetarian. Hmm. So if she came to me and I have to prescribe low carb, the diet plan will be different, right? If a 30-year-old man came to me and if he is having large tummy or fatty liver, then the low carb means something else for him, right? So the low carb is very relative phenomena, right? And till that, there are 9 to 10 doctors in my family, and lot of doctors from my college as well, and no one ever opposed me what I am doing. Hmm. Yeah, yeah. And there are two cardiologists, one at Metro Hospital, Noida, and one at Dehradun Kailas Hospital. And their wives are taking treatment from me for PCOD and for weight loss. No, but what is the general perception of common people? These are the medical practitioners that you're talking about. The general people who Yeah, come, patients, are they convinced about these protocols? For example, if you try and put them on carnivore, or if you try and yeah, say that you should not be eating rice or roti or yeah, reduce yeah, yeah, stuff like that, because we've been biased in the way we eat. The Indian meal is typically a high carb meal, and people rarely know yeah, how to without yeah, roti. yeah, yeah, So, what yeah. is the acceptance of these people when you tell them about these protocols? Actually, when a patient comes to you and you said to him or her, stop eating grains, Mm. right? Or stop eating fruits, right? Either they will slap you or they will left you, right? So I start my conversation teaching them the basic physiology and basic biochemistry and basic evolution and basic history, right? I never said that you don't have to take fruits, right? So I give them a proper history of fruits, the proper chemistry of fructose inside our body, right? And let them decide what they want, Mm. right? And you will not believe 9 out of 10 patients follow my suggestions, because the patient behave like a child, right? So if you want to
if you want that your child follow your kind of regime, right? So first you have to do, right? So I am doing what I am prescribing for last 9 years. From after me, my family is doing all that stuff. After my family, my all relatives are doing my stuff, and people around us are seeing my family, my relatives. They are thriving well, Mm. right? I want to tell you a very funny story. In my previous hospital, I met my wife, right? She was very junior to me, and she was from Haryana, and I am from UP. And she was some other caste like Punjabi, and I am Rajput. So her family is not okay with me, right? But her mother, this incident was happening in 2017. In 2020, she said that her mother is bedridden and type 2 diabetic, right? And her mother was only 48 years old, and she was taking antidepressant pills and anti-anxiety pills and anti-diabetic pills as well. She was 84 kg. She introduced me to her mom that I am his friend's friend, right? And in next 6 7 months, she follow all my guidelines, and her mother lost around 21 kgs 6 7 months, right? And when she visited her psychiatrist at Rohtak PGI, her psychiatrist exact word was, I am stopping all your psychiatry pills because you don't need, right? So after a month, my wife told this incident to all her family, and her family is joint family, right? So this, I can say, the change, yeah. Then her family told her to call him up here, Mm. right? Low carb So helped your love story yeah, get kind of yeah, as well, yeah, yeah. low So carb is. I always start with baby steps. If a Mhm. patient is coming to me, I will never say stop the grapes, stop the fruits. Yeah. Dr. Shraddhey, tell me, why is there a general fear of meat and saturated fats in India? And like we have been a country who have been eating meat. There are mentions in our ancient text as well about meat to be used as medicine and to be used for treating various conditions. Why are we scared now as a nation of meat and saturated fats? Actually, it's going on for last 5,000 years, Mm. right? So meat was actually the diet of king's family. Why the diet of king's family? Because the supply of meat was not enough to feed all the population, right? So I can say through religion or some myths, the king's family or the elite family started propagate this myth that the meat is anti-religion, Mm. right? If you read history, the all kings family are meat based, and every our god born in king's family only. Mm. No god born in a normal family, right? Right. So in our practice also, when a TB patient came to us, Mm. we medicos prescribe them anti-tubercular pills with the prescription. We write that you should take protein heavy meals. Mm. To that, and the name was the TB. In Hindi we call, in Urdu we call it tapedik, right? And in Hindi, know the name of tapedik or TB? Mm. I am telling you, the Hindi name of tuberculosis is Raj Chama, Acha. right? Mm. Why Raj Chama? Because Raj means king, elite. So Chama means उनको नहीं होती थी वो problem, right? So tapedik is or tuberculosis is Raj Chama because they are eating high meat meals, Mm. right? So
to feed the king's family, right? If you eat proper food, you have a very sharp mind, you have some strength, and then only you can rule, mm, right? If we if we go more down, the fire inventor, the wheel inventor, the electricity inventor, the mobile phone inventor, the sportsman or woman, or Olympic gold medals or bronze medals or silver medalists, or even Nobel Prize winners, check their diet, right? So if anyone taking like 30 to 50, 35 years of this kind of meat rich meal, and after that for some money they start talking like vegetarian or veganism, right? So from there these myths are coming, and for governments also, for modern governments also, it's not possible to feed this kind of food for 8 billion of people, right? In our country, like 1.4 billion people, how can government can feed like meat every day or eggs every day or fish every day? So the shortcut is propagate the myths because that angur khatte hai. yeah. On the first day of the session, I was having a session with Dr. Ken Berry, and Yeah. he said the same thing. And I think it's common history. I've read about it. That Hmm. grain and cheap source of carbohydrates were mainly for the slaves, Hmm. while the Yeah. meat and the saturated Yeah. fat were for the elite. Hmm. So this makes Yeah. sense. If you are to have a fit body and a fit mind and to be able to rule, I think you should be having, or they would be having, the best foods possible. So where does this Yeah. virtue, you know, virtue signaling of grains come from, and how true is that compared to the, the meat culture that we had historically? How do grains came in and became so big that we ultimately became a grainitarian nation, as Shashi says? Hmm. 80% of our plate. If yeah, if we can say in short history, so Hmm, in 50s and 60s, like 70 years back, hmm, there was a phenomena like a green revolution, hmm, and the green revolution was nothing, just the we changes the very gene pool of the wheat, right? So that increases the production of wheat 7 to 8 times, right? So we are eating grains from the very initial days, and we started agriculture around 10,000 years back, right? So we are not carnivore. We are not fruit only diet. We are not following just grains. We are eating all kinds of things, right? So in 100 years, we make some changes in the genes of the grain, right? And last 50 to 60 years, this flowering of the grains like flower. So what happened by these two processes? The digestive time of the grains shot down to 30 to 40 minutes, or we can say like 50 minutes. hmm, And on those previous grains, like 100 years back or 150 years back, right, the digestive time was very high, like more than 2 hours or 2 3 hours, hmm, and we were eating like 2 or 2.5 meals a day as well, right? So most of the grains and most of the fruits were not available like 100 years back, and the sugar came just 40 years back, right? So before that, in my family in Kanpur, I remember whenever a very good relative came to our home, only when we prepare tea with sugar, hmm. and the rest of the time we prepare tea with jaggery, right? When very special guest came, the roti prepared with wheat flour only, right? For normal days, we were eating like maize or millets roti, right? So we as a human have a very short-term memory, right? So if we ask our grandfathers or grandmothers, they will tell us, and 30 40 years back, uh, every home is having now television, right?
And on television, on those ads, the people came with white coats, and they are not doctors, and they are suggesting you to change your oil, mm, right? So the all the knowledge, the which are coming from our ancestors, it cut short by media and these people, right? Why are humans are so different from animals? Because we trickle down our knowledge to our next generation, mm, right? Animal can't do this thing, right? What TV and media did in 40 years, they cut short this transfer of knowledge from our previous generation to our generation, right? So in my clinic, I am giving the knowledge, the knowledge our ancestors were following only. mm. That Yeah. brings me, yeah, that brings me to the. I have so many things to ask, so maybe we'll keep the answers short. Uh, what do you have to say to people who advocate 6 to 8 meals a day? Because I see that very commonly on social media. I see that everywhere. There's a general belief of people. I don't know what's virtuous about eating 8 small meals a day. How would Yeah. you review that? If you eat 4 to 5 gram of carb or anything else, or you eat half kg of carb, the insulin will release, Mm, right? Insulin will release and it will sustain at 1 to 2 hours in your blood, a particular level, mm, right? If you eat 6 to 7 times, right? So if you multiply 2 or 2.5, the insulin level will sustain above around 15 to 16 hours a day, mm, right? What insulin do? Insulin is not a bad thing. When we were jungle, we were in jungle around 10,000 years back, right? uh, in 2 3 days, or we can say in 7 days, or we can say 2 3 times a day, we were having meals, right? And if I can say, if we kill a goat, right, and our family is around 3 people, right, and in 2 days we have eaten all whole full goat, right? So per person, we can say 3 to 4 kg of meat we have eaten in 2 days. So 3 and 4 kg of meat, around 10 to 15,000 of calories, right? And in future, we don't know if food is coming or not. So at that time, what insulin did, insulin store this extra calorie and convert it into fat, right? And stored it for the future. But in today's world, right, we have a continuous supply of food, but insulin is still there. And when insulin is high, it will prevent the burning of fat. And it's common sense why it's prevent the burning of fat. mm, Insulin high means there is enough supply of food. Then why to burn the fat, right? So you have putting your body under stress for lot of stresses, like, so I am giving an example. If any middle class family, they will save money, right, in LIC or in saving account or FD, right? So there is a data of government that there is more than 90% of income, the FD money, fixed deposit money, belongs to the middle class. So from that data, can we say that middle class is very rich? No, we can't, right? So if your body feels that there is not incoming of energy, it mm, will start storing the fat or mm, fixed deposit. Yeah. So if you give proper fat, right, proper meals 2 to 3 times a day, body will burn your stored fat. Why? Because if you take just 2 3 meals, the mm, insulin level will go down and body will feel there is no need to store energy because insulin level is goes down. mm. So the problem Yeah. in today's times is what you're meaning to say is overeating, and this concept of 6 to 8 to 10 meals, small meals through the Yeah. day If is I yeah, if I remove refrigerator, mm, right? If I remove online portals of buying food, mm, nobody can sustain 6 to 7 meals a day. Nobody, mm, right? And
before 30 to 40 years, nobody was follow this routine 6 to 7 meals of day. Mm. And then compare the obesity rate 40 years back and now, Mm. right? Everybody gaining knowledge from social media, dietitian, doctors, 6, 7 meals. Then why we are getting obese, Mm. Mm. right? That brings me to the next question, Dr. Shraddhe. Uh, the common belief or myth maybe that the Indian thali is a very well balanced thali. In Mhm. that context, how did we become the diabetes capital of the world? Mhm. If we see the thali, right? The 50 to 60% the chunks will come from grains, and majority two grains. I can say like wheat and grains, right? So 50-60% is are grains, right? And the third thing will be the dal, Yeah. right? And whenever my patient came to me, I asked them what are your protein sources, right? They say dal, we eat dal, right? So I ask uh, what amount of dal you are eating. So they say one katori, and what one katori means. Then they say my wife in the morning took 1 cup of raw dal and cook in the pressure cooker, and we 5 people eat. So 1 cup of raw dal is around 100 gram, right? And 100 gram dal is 16%, or I can say 16 gram of protein. So 16 gram of protein they divided in 5 family members. Yeah. So 3 to 4 grams of protein is coming from dal, right? And in wheat and rice, I can say 6 to 8% of low quality protein, right? So, and the other thing will be right, one vegetable, and that vegetable 90% time that vegetable will contain potato, right? Potato again, the glycemic index of cooked potato is around 96 to 98, Mm. right? Just like glucon D, Mm. 100, right? So the whole sugar, sucrose, glycemic index is 70, and the boiled potato or cooked potato have glycemic index 98, Mm. right? So how can we say this is a perfect meal? In class 6, 7th, or 10th, we were listening a word balanced diet, Ah, right? balanced. Mm. Santulit ahar, right? So whenever a patient came to me, this type of patient, who said that आप Indian thali हिंदी is में भी perfect, बोलिए आई थिंक डॉक्टर yeah, कटियार आप हिंदी में भी बोलिए ताकि ज्यादा हाँ, लोग समझे ये हाँ, बैलेंस कॉन्सेप्ट ये अजूबा हाँ, कहाँ से आया एंड शुड वी बी ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट और शुड वी बी ईटिंग अ yeah. अनबैलेंस्ड डाइट बोलिए इस ये ये तो मैंने खुद से डेवलप किया है कि पेशेंट को समझाना कैसे, और ये एक्चुअली में वर्क भी करता है, और ये साइंटिफिकली सही भी है। तो मैं उससे कहता हूँ कि बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, मुझे डेफिनेशन बताओ। हम्म तो वो कहते हमने सुना है बट डेफिनेशन नहीं मालूम हमें, है ना? हम्म तो मैं कहता हूँ कॉमन सेंस लगाते हैं हम अपना बैठ के आज। तो बैलेंस डाइट का 3 मैक्रोज होते हैं, सबको पता हम्म है ना? प्रोटीन, फैट एंड कार्ब, है ना? तो किसी बुकिश नॉलेज पर नहीं जाते, हम सिंपल इसी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। मैं पेशेंट से ऐसे बात करता हूँ, यही सॉल्व कर लेते हैं। तो कह रहे ओके। तो अगर कोई लेडी है तो मैं कहता हूँ आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी, क्योंकि मेरे पास जो लेडीज आती है वो थोड़ी सर्च करके पढ़ के आती है काफी, है ना? तो वो कहती है मुझे 1400 1500 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। तो मैं कहता हूँ, मैंने कहा तीनों से कैलोरी मिलेगी फैट एंड, कहती है हाँ तीनों से कैलोरी मिलेगी। तो मैंने क्या कहा कि सिंपल आप डिवाइड कर लो। संतुलित का बैलेंस का मतलब होता है 33%, 33%, 33%, है ना? अभी इतनी हाइपर वेजिटेरियन डाइट है, इसको अभी इस पे चेंज करो पहले स्टेप में। वो कहते कैसे चेंज करें? तो 500 कैलोरी कार्ब से लो, 500 प्रोटीन से लो, और 500 फैट से लो। फिर मैं उनको फार्मूला देता हूँ कैसे लेना है। तो अगर 500 कैलोरी कार्ब से लेना है तो 125 ग्राम कार्ब हो गया। अभी मैंने उनको कुछ नहीं बताया, कीटो, लो कार्ब, कुछ नहीं बताया, है ना? फिर मैं उनको बताता हूँ अगर 500 फैट से लेनी है तो डिवाइड बाई 9, है ना? तो 55 ग्राम के करीब। सेम विथ प्रोटीन, 500 डिवाइडेड बाई 4, है ना? तो 125 ग्राम प्रोटीन भी हो गया, राइट? बैलेंस 33%, 33%, 30।
When they started the 125 gram of protein, like from from the next 2 to 3 days, they start feeling satiety. Mm. Uh, So ultimately, their carb intake will go down slowly, 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 slowly. Mm. If you anyone can, if any adult woman, if he take like 120 gram of protein, right? So next day she will not take 120 gram of carbohydrate. हम्म तो कहने का Yeah. मतलब ये है कि इंडियन थाली जो है ये बैलेंस डाइट है कि अनबैलेंस डाइट है, और क्या डायबिटीज और डायबिटीज कैपिटल बनने में इसका कितना बड़ा हाथ है? जो इंडियन थाली है, इंडियन जो इसको बैलेंस कहते हैं, उसका डाइजेस्ट। बेनिफिट है ये शॉर्टकट है ये 1.4 बिलियन पीपल को फीड करने का। और गवर्नमेंट ना अपने रिसोर्सेज यूज करना चाहती है, ना दिमाग लगाना चाहती है ना। और प्रॉब्लम, अगर हम हाई प्रोटीन पे जाते हैं तो हम्म। हमें आंखों से दिखता है कि उसमें वायलेंस है। हम्म। नहीं, वायलेंस दिखता है एग्स में, पोल्ट्री में, मीट, रेड मीट में वायलेंस दिखता है क्योंकि हमें ब्लड दिखता है वहां पे, है ना। ये प्रॉब्लम होती है जब हमें एजुकेशन ना दी जाए प्रॉपर। हम्म। मैं खुद भी, मेरे फादर लॉयर थे, मैं वैसे फार्मर फैमिली से हूँ, तो मैंने देखा है कि एग्रीकल्चर कैसे होता है ना। हम्म। तो हमारे यहाँ एक पिल आती थी, सल्फास की पिल। तो वो हम अपने जो गेहूं या व्हीट स्टोर होता था हमारे घर में, उसमें हम रख देते थे। और अगर चूहे खाने आते थे उसको तो मारे जाते थे वो, है ना। तो डेली बेसिस पे 3 to 4 रैट्स हमारे घर से निकलते थे, हम्म। जो चूहे दवाइयाँ खाने आते थे, हम्म। है ना। किसानों में, अब अगर आपको एग्रीकल्चर करना है, राइट, तो आपको पहले इसके लिए फील्ड चाहिए, खेत चाहिए। खेत चाहिए तो आपको जंगल काटने पड़ेंगे। तो जंगल में हैबिटेट किसका था? एनिमल्स का। ये वायलेंस नहीं है हम्म। ना। तो कभी मैं पेशेंट से कहते नहीं हूँ कि मीट खाना शुरू कर दो, अंडे खाना, क्योंकि मुझे पता है कि इनका डिफेंसिव मैकेनिज्म है कि ऐसे ही बोलेंगे, ये एंटी रिलीजन है ना। तो अगर हम रिलीजियस गॉड्स की तरफ भी जाए, उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ें, इवन गौतम बुद्धा, ही वॉज ईटिंग मीट फॉर 16 years, इनिशियल 16 years। Yeah, in fact, it's दैट्स व्हाई written ही, that या Gautam या Buddha died by या eating या contaminated food. या एग्जैक्टली, या एग्जैक्टली। और इवन करंट एरा, ऑल द पोएट्स, ऑल द नोवेलिस्ट, या ऑल द साइंटिस्ट, you can go through their history. And there was an interesting case came to me last year. दो ब्रदर आए मेरे पास, and they are from उत्तराखंड, right? They are from अल्मोड़ा, उत्तराखंड। एंड जो एल्डर ब्रदर थे वो रहते थे दिल्ली में लास्ट 20 years से। हम्म। और जो छोटे भाई थे वो अल्मोड़ा ही में रहते थे अभी भी, है ना। तो जो बड़े भाई थे उनकी शादी किसी से हुई, तो उन्होंने क्या किया कि उनकी फैमिली में एग्स भी बंद कर दिए लास्ट 20 years से दिल्ली में। तो वो जब सभी लोग मेरे पास आए तो उन्होंने यही एक्सक्यूज दिया कि ये एंटी एनवायरनमेंट है मीट, और एंटी रिलीजन है, और इसमें पोल्यूशन बहुत होता है, और वायलेंस है इसमें। तो जो हम्म। उनके छोटे ब्रदर थे वो अल्मोड़ा में रहते थे, और 4 5 डेज एक रेड मीट लेते थे, गोल्ड मीट, है ना। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 36 years old, जो दिल्ली में थे 38 year old, राइट। जो 38 year old थे उनको सब मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, एवरी प्रॉब्लम ही वाज हैविंग, राइट। So he was vegetarian for 20 years, not taking even eggs. He was taking only safola, this kind of vegetable oil. And I gave them an example. हम्म। The younger brother is eating mutton for 4 to 5 days a week, and it is there in the culture in Uttarakhand, right? All the party people eat meat 4 to 5 days a week, right? So whenever you visit a hilly area, you will see their goats are eating the grass, right? हम्म। And they caught those goat and slaughter the goat, right? एंड जो उनके छोटे भाई थे वो आधा किलो, हाफ के जी मटन खाते थे दोपहर में, और सुबह 4 eggs, और शाम को थोड़ा सा सैलेड। और फिर उनको भूख नहीं लगती थी, कोई क्रेविंग नहीं होती थी। जो उनके बड़े ब्रदर थे दिल्ली में, उनको सुबह कॉर्नफ्लेक्स चाहिए, राइट, विद मिल्क, विद स्किम्ड मिल्क। उसके बाद एक फ्रूट सैलेड चाहिए विद सॉल्ट, राइट। उसके बाद फिर एक वेजिटेबल सैलेड चाहिए, है ना। फिर उसके बाद लंच करना है, रोटी सब्जी दाल एंड ऑल दिस। फिर हम्म। उसके बाद ओट्स लेते थे वो, राइट। अब इमेजिन करो,
जो उनके छोटे ब्रदर हैं जो मटन खाते हैं उनको क्रेविंग्स नहीं होगी शाम को। उनके लिए कुछ भी एग्रीकल्चर की क्या जरूरत है, एक गोड्स है जो उस हिली एरिया में घूम रही है, ग्रास खा रही है जो नेचुरली ग्रोन हुई है वहां पे, है ना। कोई भी मैन्योर का यूज नहीं किया गया, कोई भी जंगल नहीं काटे गए, राइट। कोई भी डीजल का यूज नहीं किया गया, कोई भी ट्रैक्टर यूज नहीं किया गया, राइट। अब जो बड़े ब्रदर दिल्ली में रह रहे हैं, इनको शुगर लेना है, इनको व्हीट खाना है, इनको कॉर्नफ्लेक्स खाना है जो यूएस से आ रहा है ना, इम्पोर्टेड आ रहा है। अब वेस्ट यूपी का सारा जो जंगल था उसको कट करके वहां पे शुगर केन की क्रॉप लगाई, है ना। जंगल सारे खत्म किए वेस्ट यूपी के। फिर उसके बाद अंडरग्राउंड वाटर यूज किया फॉर इरिगेशन, राइट। इसीलिए वेस्ट यूपी का जो पानी है, जो अंडरग्राउंड लेवल है, काफी नीचे चला गया। हम्म अब उसमें खादें हमें डालनी होंगी, मैन्योर्स डालने होंगे, पेस्टिसाइड डालने होंगे, क्योंकि शुगर केन यहाँ की नेचुरल क्रॉप तो है नहीं यूपी की, है ना, उसको सेव करना है। अब शुगर का मैं एक एग्जांपल दिया, ऐसे वेट भी है, ऐसे मेज भी है ना, ऐसे बहुत सारे स्पाइसेस भी हैं, इनका ट्रांसपोर्ट। फिर चिप्स भी खाना है आपको। अगर मैं किसी से ही पूछता हूँ, अगर आप 300 to 400 ग्राम चिकन या मटन खा लो आप लंच में, आपकी क्रेविंग नहीं होती शाम को, है ना। तो स्नैकिंग और जो उसके रैपर आते हैं प्लास्टिक्स के, चिप्स के, और ये कौन कंज्यूम करता है? हम्म जिसने भी अगर हाफ के जी या 400 रेड मीट खाया होगा या एक सुबह खाए होंगे, वो ये चिप्स के पैकेट ये सब नहीं कंज्यूम करता है। हाँ तो कौन पोल्यूशन कर रहा है, कौन वायलेंस कर रहा है ना। हमें आंखें खोलने की जरूरत है। गवर्नमेंट एजुकेट नहीं करेगी, हमें खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। हम्म गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट का विजन होता है 5 ईयर 10 ईयर्स का, उसको हम्म एक अगला इलेक्शन या उसके बाद वाला इलेक्शन जीतना है। हम्म और ये इन्होंने कहीं से नहीं सीखा है, ये इन्होंने 5,000 सालों से सीखा है कि ऐसे करना है। अगर एलिट को एलिट रहना है तो जो नॉलेज है हम्म वो स्प्रेड नहीं करना है, हम्म। वरना एलिट नहीं रहेगा फिर वो। डॉक्टर डॉक्टर कटियार, जल्दी जल्दी थोड़े बहुत क्रिटिकल क्वेश्चंस मैं आपसे पूछती हूँ, बिकॉज वी हैव ओनली आई थिंक 13 मिनट्स लेफ्ट। 30 मिनट या 13 मिनट्स लेफ्ट। फ्रूट्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? पीपल से फ्रूट्स आर वेरी गुड, इज इट फॉर या एवरीबडी? और कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, खाना भी चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? लोग, जब भी पेशेंट आता है मेरे पास, मैं कभी नहीं कहता हूँ फ्रूट नहीं, बंद कर दो, कम कर दो, है ना। तो मैं पहले फ्रूट, ग्लूकोज क्या है, फ्रक्टोज क्या है। अब फ्रक्टोज को नेचर ने क्यों चुना है, ग्लूकोज क्यों नहीं चला, क्योंकि थोड़ा स्वीट ज्यादा होता है। तो उससे क्या होता है, फ्रक्टोज को कम अमाउंट में ट्री को प्रोड्यूस करना पड़ता है। स्वीट ज्यादा है हम्म तो वो एडिक्टिव भी ज्यादा है ना। हम्म तो अब फ्रूट का जो सीजन है, किसी भी आप एरिया में चले जाओ प्लेनेट के, वो हम्म आता है पीक समर या स्प्रिंग सीजन में, हम्म राइट। पीक समर में क्यों आता है? पीक समर में इसलिए आता है क्योंकि सीड, उस फ्रूट के अंदर सीड भी होता है। पीक समर के बाद मानसून आता है, जब आप फ्रूट खाओगे वो सीड क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। तो टाइमिंग क्या है उसकी, फ्रूट की, पीक समर, है ना। अगर हम और हिस्ट्री में जाए तो जैसे अभी हमें ड्रैगन फ्रूट का पता है कि अभी आया है जस्ट, थाई गुआवा अभी आया है, राइट। बहुत सारे प्लम्स अभी आए हैं, 10 ईयर्स बैक नहीं थे, इवन 20 ईयर्स बैक तो कीवी भी नहीं था, इतनी सारी स्पीसीज नहीं थे, है ना। नॉर्थ इंडिया में अगर ट्रांसपोर्ट नहीं हो, गुड्स ट्रेन ना हो, ट्रक्स ना हो, जो कि 100 ईयर्स बैक नहीं थे, तो हम हम्म साउथ इंडिया के फ्रूट्स कैसे खा सकते हैं? अगर कोई साउथ इंडिया में है तो नॉर्थ इंडिया के कैसे फ्रूट खा सकता है? अगर हम नॉर्थ इंडिया में है तो हम चाइनीज लीची कैसे खा सकते हैं, हम्म है ना। तो नेचर हमसे चाहती है कि उस एरिया में जब पीक समर हो तब हम फ्रक्टोज का कंज्यूम करें। फ्रक्टोज के बाई प्रोडक्ट क्या होते हैं, फैट, यूरिक एसिड एंड एनर्जी, आई कैन से, हम्म राइट। अब मानसून का सीजन आया, जंगल में आपने खूब फ्रूट्स खाए थे गर्मी में, अब मानसून आया तो वो जर्मिनेट करेंगे। हम्म उसके बाद ऑटम आएगा, विंटर आएगा, फूड की स्कार्सिटी हो जाएगी, फूड अवेलेबल नहीं होगा ज्यादा। बट जिस भी एनिमल ने खूब सारा कंज्यूम किए होंगे फ्रक्टोज, उसके पास फैट का स्टोरेज होगा। अब हम्म। वो फैट स्टोरेज उस विंटर में काम आएगा, है ना। कहने का मतलब ये तो कि फ्रक्टोज, स्केर्सिटी डाइट पे जब आप हो, स्केर्सिटी इन्वायरमेंट में जब हाँ, आप हो, या या तो या फ्रूट्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। बट आप अभी या एक्सेस खा रहे हो, उसके ऊपर या आप फ्रूट्स ले रहे हो, तो वो या कंडीशंस को ट्रिगर कर सकती है, हाँ। सिंपली पुट। अब क्योंकि, या फ्रक्टोज एक फॉरेन बॉडी है हमारी बॉडी के लिए, उसको केवल लिवर ही हैंडल करेगा। तो हम्म लिवर जब हम इतने लार्ज अमाउंट में खाते हैं तो उसको किस में कन्वर्ट करने का ऑप्शन बचता है उसके पास? फैट में कन्वर्ट करेगा, या यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, या ग्लूकोज में ही कन्वर्ट कर देगा, हम्म राइट। तो ये फैट स्टोरेज हमारे काम आता है जो विंटर्स में खाना नहीं होता है। बट हम्म ना ऐसी विंटर्स आती है, ना ऐसा कोई टाइम आता है जब खाने की स्कैरसिटी हो, हम्म है ना। अब 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 ये समर में, एक तो जो हम जंगलों में थे,
तो सनलाइट का एक्सपोजर बहुत अच्छा था, तो विटामिन डी का लेवल ऑटोमेटिक हमारा हाई रहता था। तो हम्म, वो विटामिन डी जो हाई मिलता था मई जून के मंथ्स में, क्योंकि हम कपड़े भी नहीं शायद पहनते थे और सन एक्सपोज करते थे होल स्किन, तो हाई विटामिन डी लेवल हमें प्रोटेक्ट करता था हाई यूरिक एसिड के लेवल से। हम्म, राइट, यूरिक एसिड कोई खराब चीज नहीं है। यूरिक एसिड अगर आप जीरो कर दें तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते कुछ मंथ, है ना। हम्म, तो एक 3 to 5 या 6 का लेवल मेंटेन करना होता है। इसीलिए नेचर ने हमें यूरिक एसिड के दो सोर्स दिए हैं, एक प्यूरिन्स जो कि प्रोटीन से आते हैं, डीएनए आरएनए जब मेटाबोलाइज होता है, और दूसरा फ्रक्टोज से, क्योंकि कोई चीज जरूरी होती है तो नेचर उसके 2-3 सोर्सेस रखती है। हम्म। राइट, अब हम एक्सपोज नहीं कर रहे, बाहर जाते भी नहीं है, फ्रूट्स खाने हैं, फ्रूट कंफर्ट एक फूड है, क्योंकि वो हमारा सेरोटोनिन और डोपामिन इस तरह से ट्रिगर करता है चीजों को। सिर्फ 10 मिनट बचे हैं डॉक्टर कटियार। ये बताइए कि अगर कोई प्योर वेजिटेरियन डाइट पे है, तो हम्म, डेफिशिएंसीज होने के क्या चांसेस हैं, होती है कि नहीं होती, कितनी होती है? व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, या बिकॉज पीपल नॉट वांट टू एडमिट that if you're on a pure या vegetarian diet, you can be deficient. Please educate in two या lines. I have 3-4 more questions, so we'll need to hurry up. 9 minutes बाकी। लाइक आई ऑलरेडी सेड दैट कि हम 10,000 सालों से खेती कर रहे हैं, हम्म, और खेती हम उसी जमीन में कर रहे हैं। हम्म, हमारे स्कूल के बच्चों को दिखाना चाहिए कि खेती कैसे हो रही है। खेती में किसान क्या डालता है, यूरिया एंड डीएपी, हम्म, और इसके अलावा कुछ नहीं डालता है। हम्म, यूरिया डीएपी क्या है? यूरिया इज जस्ट नाइट्रोजन, डीएपी इज डाइमोनियम फास्फेट, जस्ट फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। हम्म, अब जो भी क्रॉप है हमारी एग्रीकल्चर की, वो 5 to 6 इंच गहरी तक ही जाती है मिट्टी में या सॉइल में। तो हम्म, जो भी टॉप सॉइल होगी 5 to 6 इंच या मैक्सिमम 1 फुट की, वहां से न्यूट्रिएंट लेगी वो। हम्म, अब हम उसमें रिप्लेनिश तो कर नहीं रहे, है हम्म, ना, यही दो खादे डाल रहे हैं। अब 10,000 सालों से उसी जगह आप खेती करे जा रहे हो, और 1.4 बिलियन लोगों को हमें फीड भी करना है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले 20-25 सालों से जो हमारी कहते हैं डार्क लीफी वेजिटेबल्स, बट जब भी आप मार्केट जाओगे आपको डार्क लीफी वेजिटेबल्स नहीं मिलेंगे। हम्म, 20 साल पहले मिलते थे, 20 ईयर्स बैक आपको मिलते थे। हम्म, अब डार्क लीफी वेजिटेबल्स क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हमारी मिट्टी में मैग्नीशियम नहीं है। हम्म। तो जो मैग्नीशियम नहीं है मिट्टी में, तो हमारी क्रॉप्स में नहीं है मैग्नीशियम। तो और कॉमन दूसरा, क्या क्या होती हैं जो वेजिटेरियन डाइट पे हैं, प्योरली वेजिटेरियन डाइट पे जो लोग हैं, उनमें क्या क्या डेफिशिएंसीज कॉमनली मिलती हैं आपको? अ, सबसे पहले तो जो जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं उनके मिलते हैं, विटामिन डी, ई, ए, के। एंड एंड सेकेंड इज मिनरल्स। मिनरल्स इन पे चार्ज होता है, जैसे जिंक पे +2 का चार्ज होता है, मैग्नीशियम पे +2 का चार्ज होता है, पोटेशियम पे 1 पे, है ना। तो इस टाइप के, या आयरन पे +2 या +3 का। तो इस तरह के आयन के पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और हमारे ग्रेन्स या वेजिटेबल्स में कुछ ऐसे टेनिन्स या लैक्टिन्स होते हैं, वो निगेटिव चार्ज होते हैं। तो इनका जो एब्जॉर्प्शन है ना, ये हैम्पर, तो न्यूट्रिएंट कम भी है, और जब आप इनके साथ लेते हो, लैक्टिन के साथ और इनके साथ टेनिन के साथ, तो ये एब्जॉर्ब भी नहीं होने देते हमारी गट में। हम्म, राइट, तो हम्म, ये प्रॉब्लम है। और हमारा जो स्टमक का पीएच है वो 1 to 3 मेंटेन या 1 to 2 मेंटेन रहना चाहिए। अब आप शुरू से ही वेजिटेरियन हो तो बॉडी धीरे धीरे एसिड का प्रोडक्शन कम कर देती है। एसिड का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो फिर इनका एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे कम हो जाता है। हम्म, इसीलिए ये प्रॉब्लम और भी पेशेंट्स में आती है। जो हम प्रोटीन की तरफ जाते हैं, किसी वेजिटेरियन पेशेंट में प्रोटीन बढ़ाते हैं डेयरी के प्रोटीन या और किसी के थ्रू या एग के थ्रू, तो उनको इनिशियली प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बॉडी यूज टू नहीं है, क्योंकि उतना एसिड ही नहीं बनना, उतना डाइजेशन ही नहीं है। तो इसीलिए स्टेप स्लोली, पहले जो स्टेप लेने पड़ते हैं, बेबी स्टेप लेके फिर शुरू करना पड़ता है प्रोटीन। ये कॉमन बिलीफ जो है डॉक्टर कटियार कि एग्स आर बैड फॉर द हार्ट, स्पेशली एग योक्स, एंड मीट इज बैड, सैचुरेटेड फैट बैड, इन रिलेशन टू डायबिटीज, इन रिलेशन टू हार्ट कंडीशंस, इसको जरा ब्रीफ में जल्दी बता दीजिए। देखिए, जो भी अगर आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल आता है ना, टोटल कोलेस्ट्रॉल, एक तो अनहेल्दी नहीं होता है कोई भी लेवल हो, और वो भी जो भी उसका लेवल आता है उसमें 70 to 80% आपके लिवर ने खुद ही बनाया होता है। हम्म, जो हमारे लिपिड प्रोफाइल में जो प्रॉब्लमेटिक चीजें आती हैं, वो बाया कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट करके आती है। उसको कन्वर्ट कौन करता है? उसको लीवर कन्वर्ट करता है ना। अब ये मिथ कहाँ से आते हैं कि येलो पार्ट फेंक देना चाहिए? मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ शॉर्ट में। 2 साल पहले एक पेशेंट आई, उनको कुछ किडनी प्रॉब्लम थी। मैंने उनको एक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास सेंड किया, पूसा रोड पे, है ना। हम्म, तो वो जब पेशेंट वापस मेरे पास दोबारा आई, तो उन्होंने कहा कि जो पूसा रोड के जो नेफ्रोलॉजिस्ट है, उन्होंने मुझसे बोला है कि आप एक वाइट खाना है, एक येलो नहीं खाना है आपको, है ना। तो उनके प्रिस्क्रिप्शन पेपर में उनकी मेल आईडी थी, तो मैंने उनको अपना इंट्रो देके मेल किया कि क्यों नहीं खाना है इनको योग। तो
उनका मेल अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा सी कैन टेक ओक्स, देयर इज नथिंग हार्म, राइट। सो फिर उन्होंने क्यों बोला कि नहीं खाना है योग? ज्यादातर डॉक्टर्स को नॉलेज होता है कि ये प्रॉब्लम नहीं करेगा, बट उनके पास टाइम कम होता है, 5 2 मिनट 5 मिनट मैक्सिमम, है ना। तो पेशेंट से वो सजेशन देते हैं जो पेशेंट सुनना चाहता है, क्योंकि डॉक्टर को पता होगा कि ये सोशल मीडिया के थ्रू, डाइटिशियन के थ्रू इसको पता होगा कि येलो पार्ट नहीं खाना है। क्योंकि अगर डॉक्टर कहेगा कि येलो खाना है पार्ट, तो डॉक्टर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो डॉक्टर अपना टाइम कभी कभी कम करने के लिए ना ये करते हैं कि बता देते हैं कि हाँ नहीं खाना। हाँ, रूटीनली सबको बताया जाता है कि एग योग स्किप कर दी। हाँ एक हाँ, तो ना वो बहुत नी जर के सजेशन है बस, और कुछ नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग, एक एक वर्ड में आंसर करते हैं, बिकॉज बहुत कुछ पूछना था आपसे बट टाइम क्या खत्म हो। क्या जितना जल्दी हो सके इसको बताइए, कितने एग्स एक नॉर्मल हेल्दी आदमी को कितने एग्स नो खाने लिमिट, नो लिमिट। एवरी डे? नो लिमिट। जितने डाइजेस्ट कर सकते हो, जितने डाइजेस्ट करते हो, नो लिमिट। नो लिमिट, कोई नुकसान नहीं है या उससे। नहीं, कोई नो सैचुरेटेड लिमिट। हेल्दी है कि अनहेल्दी है? घी, बटर, मटन का टैलो, बीफ टैलो जो लोग खाते या हैं, तो जितना फैट, हाँ या जितना फैट अनसेचुरेटेड होगा वो अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल का मतलब, जो लोग केमिस्ट्री जानते हो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। हम्म, सिंगल ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसको हम सैचुरेटेड कहते हैं। हम्म, अगर डबल बॉन्ड होगा तो वो अनस्टेबल होगा। अगर वो टूटेगा तो वहां पे ऑक्सीजन आके जुड़ेगा, जिसको अगर आप नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल बाहर रख दे तो रेंसिड हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो क्यों रेंसिड होते हैं? कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को वो एब्जॉर्ब या रिएक्शन कर लेते हैं। बट अगर आप सैचुरेटेड फैट खाओगे, है ना, तो वो स्टेबल है, कुकिंग में भी स्टेबल रहेंगे। मतलब घी, ऑक्सीजन अगर बटर, बाहर टैलो, को, इसका या इस्तेमाल करना चाहिए और रिफाइंड का ये इस्तेमाल करना चाहिए। ये मुझे लगता है कि इसमें इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। मैंने सूरदास की कृष्ण लीला पढ़ी है ना। मैसेजिंग मैंने है ना। सूरदास की कृष्ण हाँ, मैंने सूरदास की कृष्ण लीला पढ़ी है, और भगवान श्री कृष्ण सिर्फ बटर, मक्खन, घी यही सब खाते थे। वो हाँ, बैठ कैसे हो सकता है? मस्टर्ड हाँ ऑयल के बारे में आपका क्या व्यू है? मस्टर्ड ऑयल बहुत यूज होता है सर, नॉर्थ ईस्ट में। I like the taste of mustard oil, and some vegetables, some especially some North Indian vegetables जो है ना मस्टर्ड ऑयल में अच्छी बनती है। तो हम्म, अगर आप टेस्ट के लेना चाहते हो कभी कभी तो ठीक है, बट बेटर ऑयल आर घी, बटर एंड कोकोनट ऑयल। तो मतलब जो रोज मस्टर्ड ऑयल में खाना बना के खा रहे हैं, 2 3 सब्जी, 4 सब्जी, या जो भी खाना बन रहा है या मस्टर्ड ऑयल में बन या रहा है, उसका शॉर्ट में या बताइए इफेक्ट क्या हो सकता है? खराब, अच्छा, क्या? शॉर्ट में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। हम्म, ये इफेक्ट आएंगे लॉन्ग टर्म में। हाँ वही, लॉन्ग टर्म में आपको सारी प्रॉब्लम आएंगे। रोज खा रहे हैं और काफी समय से, हम्म, सालों से खा रहे हैं, तो इसका हम्म। एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, न कि पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। भैया बिल्कुल एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल। आई रिकमेंड मस्टर्ड ऑयल ओनली फॉर टेस्ट ओनली। मीट कितना खाना चाहिए डॉक्टर कटियार? क्या उसका हार्ट के कंडीशन से या डायबिटिक कंडीशन से कोई रिलेशन है, या खतरनाक है हमारे लिए? भगवान ने हम भगवान ने हमको में डाइटिक सेंटर दिया है, हंगर सेंटर दिया है। उन दोनों सेंटर को डिसाइड करने दो कि हमें कितना खाना है। और वो कब डिसाइड कर पाएंगे? जब आप ये करप्ट खाने नहीं खाओगे, जब आप रियल फूड खाओगे, तो हमारे सैटिस्फैक्टरी सेंटर को पता चल जाएगा वाया लेप्टिन कि कितना खाना है। हमारी ठीक है। जो स्केल है, किचन स्केल, वो नहीं बता सकती हमें कितना खाना वीट जो लोग छोड़ना चाहते हैं, लोग काप पे आना चाहते हैं, उनको नेक्स्ट वो रहता है कि ज्वार बाजरा खा ले क्या? तो ज्वार बाजरा, है। मैं ज्वार बाजरा, हाँ ज्वार बाजरा, इफेक्ट इसमें कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। मैं ज्वार एंड बाजरा को एज ए डेकोय यूज करता हूँ, राइट। तो एक ट्रांजिशन फेज में मैं ज्वार एंड बाजरा को यूज करता हूँ। अगर आप पहले से चपाती को दोगे नहीं खाना है तो वो पेशेंट परेशान हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो इन ट्रांजिशन फेज वी कैन ऐड लाइक मिलेट्स, दिस। ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर कटियार। आई थिंक शशि इज थैंक यू। हियर, सो या विल हैव द लास्ट वर्ड फ्रॉम शशि। या वेरी इंटरेस्टिंग सेशन विद यू। Yeah, Dr. Shraddhey, हेलो thank सर, you very हेलो much. सर, Thank you very much थैंक यू, for coming in this session and Ira well hosted. थैंक यू। इसका खास बात यह है कि सर कि आपने अच्छे हिंदी में बात किया, क्योंकि हमारा YouTube चैनल में बहुत डिमांड है कि ब्रिंग अ हिंदी ओके। स्पीकिंग डॉक्टर, क्योंकि क्या है हमारा या पॉपुलेशन अभी दे वांट टू नो या दिस मेजॉरिटी। कंसेप्ट इन हिंदी Hmm. and या and sir, we want your exclusive session with D Life. It is going to be only fully in Hindi I so was that just going to या say that you should do a podcast with him. It's going to be so interesting. so it is going to be या exclusively Hindi only, sir. So thank you या very या much for वी joining कैन डू this. इट रेगुलरली। या Please. या वी कैन डू इट रेगुलरली। या Yeah. So thank you, doctor, for appearing in this या session.